Yes, be ready. Start. The Parliament has the power to formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in Article 286 by promulgated law. Stop. Still further, by virtue of Entry 54 in List 2, the power to impose taxes on sale or purchase of goods other than newspapers vest in the state. Stop. The power is subject to entry 92A in list 1, which empowers the parliament to levy taxes on imports and exports. Stop. The obvious purpose is to ensure that the tax imposed by the state does not interfere with the foreign as well as interstate trade and commerce, as these are matters of national importance. Stop. Under Article 286, the law promulgated by the state in so far as it provides for the levy of tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in interstate trade or commerce be subject to such restrictions and conditions in regard to the assessment of levy rates and other incidents of tax as Parliament may by law specify. Stop. Thus, in matters relating to interstate trade and commerce as well as imports and exports of goods of special importance, and constitution recognizes the supremacy of the parliament in so far as the imposition of sales tax etc. is concerned. Stop. In exercise of the power under the constitution and in the interests of national economy, the parliament has enacted the 1956 act. Stop. One of the basic objects was to authorize the state governments to levy and collect tax on the sale or purchase of goods in the course of interstate trade. Stop. It was also intended to fix the size of the sale or purchase of goods. Stop. The provisions of the 1956 Act were enforced during the year 1957 and 1958. Stop. Chapter 1 primarily contains provisions of a preliminary nature. Stop. It defines the various expressions used in the statute. Stop. Chapter 2 embodies the principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in the course of interstate trade of commerce or outside a state or in the course of import or export. Stop. Chapter 3 deals with the levy of the interstate sales tax. Stop. The provisions regarding sale or purchase of goods in the course of import or export is contained in section 5. Stop. A reference to this provision shall be made at the appropriate stage. Stop. Chapter 4 deals with goods of special importance. Stop. Paddy and rice are mentioned as separate items. Stop. Section 15 deals with restrictions and conditions in regard to tax on sale or purchase of deal declared goods within a state. Stop. It is preferable to the provision of Article 286 of the Constitution. Stop. By Act 33 of 1996, clause was added to the provision. Stop. Thus, the relevant provision reads as under. Stop. Where a tax on sale or purchase of paddy referred to in sub clause of section 14 is leviable under the law, and the rice procured out of such paddy is exported out of India, then for the purchases of subsection 5 the paddy and rice shall be treated as a single commodity stock. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप
इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर, जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।